Okay, getting this. Okay, manage Azure Active Directory identities. So, yeah, Meenal and Rufi, can you see this? Yes, sir. So in order to allow Counter users to authenticate by user AD, you have been tasked with provisioning users and group accounts. So this is a scenario, lab scenario, that this Contoso users are there. Contoso is the name of company. They want to be authenticated. We want to implement authentication. So we're using Azure AD for the same, right? You've been tasked with provisioning users and groups accounts for that, for the same. So memberships of the groups should be updated automatically based on the user job titles. So create and configure Azure AD users. हाँ steps सब दिए हैं इसके अंदर. So we want to know how to create users and groups. Membership of the group should be updated automatically based on the user job titles. You know, group means what? Group is a collection of users. So instead of giving permission to a single user, we give permission to a group. So when we give permission to a group, what will happen? All the people within the group will get the permission, right? Yes, sir. So, and the thing is, normally the administrators they give permissions manually. Manually, they are, you know, manually they add the membership to the group. That means the users are added to group manually, normally speaking. But in this, what is happening? We are talking of dynamic membership. Dynamic membership means if from the group title only it will come to know which group to assign. So as soon as the user is created, depending on what title you give to the user, automatically that user will get enrolled for that group. Getting me? So you also need to create a test Azure AD account with a test user account and grant that account limited permissions to resources and Contoso Azure subscription. So you know that we have, when we created the Azure account last time, so automatically one Azure AD is created, but we'll also create another AD tenant. We can create more tenant means the Active Directory, Azure Active Directory. In that we will create a one user and we'll invite that user to this AD to and give him permission. So we can, that is called as guest users. So we can give permission to the guest users, right? So from the other uh, Azure account, it will be invited here for the working, right? We can give permissions to the users from the other ADs to have access to this, right? Yes, sir. Clear now? Yes, sir. So create and Yes, sir. configure Azure AD users. So this is the task which we are supposed to do. Create and configure Azure AD users, create Azure AD groups with assigned and dynamic membership, create an Azure Active Directory tenant, manage Azure AD guest users.
Okay, so this is what you have to do. तो इसमें देखिए ये डिफॉल्ट यहाँ पर ही पता है टास्क का थोड़ा ओवरव्यू दिया है. Default Azure AD tenant you can see which is created for us. So we are going to make two groups. One is IT Cloud Administrators group, another is IT System Administrators group. And in that we are going to make membership type as dynamic user. So there is manual user and dynamic user. So we'll make the membership as dynamic user for this. Okay. And then we have we'll make yet another group where IT, which is called as IT lab administrators. Its membership type will be assigned. Assigned means manually we have to add users to this group. Getting me? So like this. So we do it like this. Okay. So दो डायनेमिक यूजर एंड एक असाइन का भी टाइप होता है मेंबरशिप. हाँ एक डायनेमिक मतलब डायनेमिक मेंबरशिप. ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करने गेस्ट यूजर. गेस्ट यूजर को रोल नहीं और जॉब टाइटल कुछ भी नहीं रोल नहीं है उसका. डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट से जॉब टाइटल क्लाउड यूजर. So dynamic membership type dynamic user means it is like automatically. हाँ एक मिनट. जी सर. क्लियर है? समझ में आ गया ये? डायनेमिक यूजर मेंबरशिप, डायनेमिक मेंबरशिप, यूजर मेंबरशिप में असाइन, दोनों में क्या फर्क है? असाइन में मैन्युअली यू हैव टू ऐड यूजर्स टू द ग्रुप्स, whereas in dynamic automatically the membership will be group membership will be automatic based on the job title of the users. So as soon as you create the users, depending on the job titles, they will get the membership, right, to the group. Getting?
second, can you repeat that? Dynamic member. Dynamic membership means when we create the user, and when we create the user we have to give some description for the user, right? कि उसका job title क्या है, ऐसा सब. तो job title का, based on job title automatically it will become member of a group. We don't have to do any task. You don't have to do any activity to define the membership. Automatically हो जाएगा वो. Yes. उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Getting? Yes, sir. So the group will be assigned to this user, or this user will be assigned to a group? User will be assigned to the group automatically. एक ही बात होगी. बट मैनुअल में आपको मैन्युअली यूजर को ग्रुप में डालना पड़ेगा. तो ये लैब में यू आर लर्निंग. रूफी, आर यू एबल टू हियर मी? रूफी, Yes, sir. तो ये डायनेमिक यूजर ग्रुप, मतलब जब ग्रुप क्रिएट करेंगे तो वी हैव टू चूज व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इट इज इट अ मेंबरशिप टाइप डायनेमिक है या असाइंड है. ओके okay? और डायनेमिक मेंबरशिप एनेबल करने के लिए भी वी रिक्वायर सम प्रीमियम मेंबरशिप. तो ये इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट. दैट इज आल्सो गिवन. So total three groups are created in this default Azure AD tenant, right? So task 1, task 2 में हम ये create करेंगे. Task 3 में what we do is we create another AD tenant, another Azure Active Directory was created. उसमें एक user create किया हमने, okay? और वो user को हमने ये इसमें assign कर दिया, right? So that user we assigned it here. Getting? तो इस तरह से हो गया वो. We are, it's like we want to give a membership, uh, we want to give the security or membership for other people also, like people from other organization. We want to give membership, कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है उसको अगर हमारे रिसोर्सेज का मेंबरशिप देना है तो we can do that. We can call that user to our this thing, okay? So that's called as guest user. So that also we are looking at that also, right? Yes. Guest user. That is also, that is done manually, sir. हाँ That is done manually. हाँ, If ये we are मैन्युअली giving ऐड करना, वो membership तो of मैन्युअली another करना पड़ेगा ना. हाँ, sorry. that we have to do manually. That's why this assign is created, no? तो उसमें that user is assigned to this particular group in our Active Directory in our organization. Okay. Yes. And also one group can have membership of another groups also, like IT lab administrators में आप दोनों ये दोनों groups भी डाल सकते हो, right? That means a group can have another group as a member also. That is also possible. ऐसा भी है इसमें, right? Yes. So this is how it works. Clear? So these are the instructions given here, like how to do it. So just give me a second. My team wants something from me. Just wait. Just give me a minute, please. In the meantime, just read the document. We'll be performing the steps. Okay.
Sir, some of the documents are PDF, the others are in Notepad or Word because I'm trying to open them in Notepad. They are not opening. The one that you have sent नोटपैड us. नोटपैड पे होगा ना, राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करो, जो नोटपैड पे टेक्स्ट करती फाइल हूँ। है ना। ओके सर, वर्ड में नहीं हो रहा। डोंट ओपन अदर थिंग्स, जो अभी है वही करो ना। अभी क्यों, अभी से क्यों आगे बढ़ रहे हो? शांति रखो मैडम। ओके, सो नाउ कैन वी डू दिस स्टेप्स, थोड़ा सा देख लेते फिर करेंगे हम। आर यू गाइस विथ मी? So again I am repeating this exercise for creating users and groups, right? And also creating another tenant and calling the user from other tenant to your organization. All right? Yes, sir. So create and configure Azure AD users now. So if you have previously used the trial license for Azure AD Premium on this Azure tenant, you will need a new Azure AD tenant and perform the task 2 and 3 in that new Azure AD tenant. तो हमने तो किया नहीं ना। तो sign into Azure portal. So let's sign into Azure portal. So can you see my other screen also? Yes, sir, Google.
So we'll use account that was created last time, Rufi. Okay. नो रे रूफी क्या है, कैसा हमारा ईमेल आईडी है रे? नो रे। पासवर्ड हमने दिया था sft@1234. लेट्स साइन इन टू द पोर्टल. नो. So we will just follow the instructions what is given to us. I will show you how to do it. Okay, so here you will see that so what are the steps? Let's look at that. So search for Azure Active Directory in Azure portal. search for and select Azure Active Directory. तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं Azure Active Directory. मिला क्या? Azure AD. फर्स्ट वाला सर. Okay. See, this is a subscription for us. Active Directory search करते हैं active. और about ये क्या दिखते हैं? थोड़ा सा चेंज हो गया अभी है ना, बिकॉज आई थिंक आई चोज व्हाट एंट्रा, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा B2C दूसरा हो गया ना, बिजनेस टू कंज्यूमर्स. सो एज्योर try this because they keep changing. Active Directory. Sir, it's written there. Azure Active Directory is now Microsoft Entra ID. Where it is written? इसमें सर सभी There's below add manage tenant where your mouse is right below that. करेक्ट 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 करेक्ट. तो थोड़ा चेंज होता रहता है, राइट? Microsoft Entra ID on the Azure Microsoft Entra ID create. Scroll down to the manage section. Manage section for keep user settings. तो manage पे जाना है. जस्ट मिनट जस्ट मिनट.
Okay, so we are here. Then next, we need to do? What is the next step? Let's see. Let's follow step by step. No problem. On Azure Active Directory plate, scroll down to Manage section and click User Settings and review available configuration options. So Manage section में User Settings. So Manage section में जाएंगे हम इसमें Users. and review available configuration options. मैनेज में क्या दिया था? यूजर सेटिंग्स था ना? यूजर सेटिंग्स था। जी सर। एक मिनट, यूजर सेटिंग्स। मैनेज इसमें नीचे है क्या? यूजर सेटिंग्स इज दिस इज यूजर सेटिंग्स. यूजर सेटिंग्स and review available configuration options. थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मतलब सी, बिकॉज दे कीप चेंज, क्लाउड में थोड़ा चेंजेस करते रहते हैं. So these are the various options which are available. So they are asking us to review all these options, right? जी सर। On the Azure Active Directory plate, Hmm. manage section, click users. एक मिनट, रिव्यू करो ना. यूजर्स कैन रजिस्टर एप्लीकेशन, यस. रिस्ट्रिक्ट नॉन एडमिन यूजर्स फ्रॉम क्रिएटिंग टेनेंट्स, No. नो. Users can create security groups. Yes. Grant user access. And guest users have limited access to property membership of directory objects. ये उन्होंने हमको ऐसा रीड करने बोला। हाँ, रिव्यू करने के लिए बोला है ना. एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, account connection, show keep users sign in, external users use user So features. these are the permissions. ये कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं. यूजर सेटिंग्स हम कर सकते हैं. अगर लिंक्डइन अकाउंट से कनेक्ट करना है तो अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट देयर वर्क और स्कूल अकाउंट्स विद लिंक्डइन. आजकल ये रहता है ना कि आपके जो आईडी से आप लिंक कर सकते हैं ना दूसरे अकाउंट से. तो लिंक्डइन अकाउंट को लिंक करने का उन्होंने ऑप्शन दिया है, शो कीप यूजर साइन इन ऑप्शन. ये ऑप्शन हमको पूछता है ना, जैसे अभी मैंने लॉग इन किया तो पूछ रहा था कि इसको साइन इन Yes, to करके रखूं keep क्या sign नहीं. on. Yes, yes. तो वो ऑप्शन है. एक मिनट ना, एक मिनट. ठीक है. यस सर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. एंटर एडमिन सेंटर, so default user role permissions, guest user access, administration center, LinkedIn account, show keep user sign in, external users, manage user features. अगर यहाँ पर भी देखेंगे यूजर सेटिंग्स रहेगा कुछ. So cloud is a big jungle, you can say. It's like a big hospital. तो but it's good. आप देखते रहो. You know, it's very vast. Okay, so हमने review किया, right? Review available configuration option. On the Azure Active table in the manage section, click users and then click your user account to display its profile settings. तो ये हमने यूजर सेटिंग्स देखा. अभी यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो it will show only single user, क्योंकि now only one user is there. ओके, सो ओनली वन यूजर इज देयर, तो वो दिखा रहा है. तो उसका प्रोफाइल सेटिंग पे जाना है हमको.
Now where can we get, if I go here into this user, do we get a profile here? So what have they asked us? Blade in the manage section, click users and then click your user account to display its profile settings. ये प्रोफाइल सेटिंग्स ही हो गया, ये प्रोफाइल सेटिंग हो गई यूजर की, ठीक है ना। सो दिस इज यूजर्स प्रोफाइल कि उसका यूजर प्रिंसिपल नेम इज व्हाट, ग्रुप मेंबरशिप 0, एप्लीकेशन 0, असाइन रोल्स 1, सो आइडेंटिटीज माइक्रो अकाउंट मेंबर 10th जून 2021 को क्रिएट किया है। If you want to edit any properties, you can edit from here. Okay. Okay, so we have done that also. Then click edit in the sections and set usage location to United States and save the changes. So when you go here, we say usage section. एडिट प्रॉपर्टीज में है क्या सर वो? Hmm? एडिट प्रॉपर्टीज में हाँ, edit properties में जाके you can usage location दिख रहा है क्या इसमें? यूनाइटेड स्टेट्स करना है क्या? एक मिनट, इसमें थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं ना सब। यूजर में गए हम लोग, उसका लोकेशन है ना, यूसेज लोकेशन हमको सेट करना है, तो जी यू हैव एनी लोकेशन सेट हियर? सर सेटिंग्स ऑप्शन, सेटिंग्स में जाके वहाँ पे उन्होंने बोला है क्लिक एडिट इन द सेटिंग्स ऑप्शन। इसमें मैनेज है क्या इसमें कुछ? ये सब इसका परमिशंस तो यहाँ पर दिख रहा है, असाइन रोल्स। सो यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो हमने देखा ना थियरी में कि द जो अकाउंट सब्सक्राइब करता है उस वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल मिल जाता है, राइट। वी हैव सीन दैट, राइट। जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कुछ नहीं, ग्रुप्स, applications, nothing assigned, so devices. सर वो सेटिंग्स ऑप्शन में तो नहीं है डायरेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का? वहाँ पे तो सेटिंग्स है ऊपर टास्क बार में, ये वाला सेटिंग्स है। यहाँ पर हाँ यहाँ पे एक में देखते हैं ना, नहीं नहीं वो तो पूरा इसका है। नहीं है ना? क्या वो चेंज कर देते हैं ना आजकल, तो इसलिए एक मिनट, अगेन लेट्स गो टू edit in the settings sections, प्रोफाइल सेटिंग में एडिट जाके सेटिंग सेक्शन आएगा एक्चुअली। यूजर पे गए हम लोग, यूजर्स पे और यूजर्स, we'll just check here first.
इसमें अभी कुछ है नहीं ना, लोकेशन दिख रहा है क्या यहाँ पर कोई? एडिट प्रॉपर्टी में जाके सेटिंग्स है ना, यहाँ पर सेटिंग सेक्शन, यूसेज लोकेशन इंडिया दिखा रहा है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स। मेक इट यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि जो एनेबल सर्टन सर्टन थिंग्स, लोकेशन के हिसाब से भी चीजें चलती है आपको, राइट? So why we are changing this to from India to other location? हाँ, ये स्टेट। बता रहे कि हम चेंज कर सकते हैं इसे, Okay. अगर आपको चेंज करना रहा तो कर सकते हैं इसे, Okay. ठीक है ना? सो इट Yes. इज ऑल लाइक दैट। ग्रुप्स में था ना सर वो? हम्म। कहाँ से लिए थे आप, एक बार फिर से बताओ। ग्रुप्स में लिए थे आप वो सेटिंग्स Sir, और? in this profile, object ID. हाँ। Sir, here user principal name and then below that there is a object ID. हम्म। What is the use of this? ऑलवेज इंटरनली इट ऑलवेज हैज एन आईडी, बाहर कितना भी बड़ा नाम रहे दो, बट सिस्टम लाइक्स टू वर्क विथ आईडीज ओनली। Okay. ठीक है ना? अगर आपने कोई यूजर डिलीट किया और फिर से बनाया सेम यूजर, सो डोंट थिंक सेम यूजर गॉट क्रिएटेड। इंटरनली इट इज आइडेंटिफाइड बाय आईडी ओनली, नॉट बाय द नेम, यूजर नेम। ठीक है? So same user created then deleted and again same name, same user created will have the same object ID or will have different object ID? ऑब्जेक्ट आईडी डिफरेंट रहेगा उसका, सेम Different. यूजर क्रिएट कर ही नहीं सकते आप। ठीक है Okay. ना? ऐसा आपको भान होगा कि क्रिएट किया मैंने, लेकिन नहीं होता है, वो अंदर आईडी क्रिएट होता है। आईडीज, इट मेंटेन्स आईडीज। कंप्यूटर लव्स आईडीज, कंप्यूटर लव्स टू वर्क विद आईडीज। Mhm. ओके, Yes. Yes, sir. सो दिस टास्क वन वी हैव डन और नॉट येट। अभी यहाँ पर आके स्टेप नंबर 6 में क्या है, नेविगेट टू यूजर्स, ऑल यूजर्स ब्लेड एंड देन क्लिक न्यू यूजर। तो एक नया यूजर हम क्रिएट करेंगे अभी, राइट? तो उसका यूजर नेम दिया है, इनिशियल पासवर्ड दिया है, यूसेज लोकेशन, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट। तो ये जॉब टाइटल हम दे रहे हैं इसको, राइट? ओके सर। देन कॉपी द फुल प्रिंसिपल नेम, you will need it later in this task, so just we'll follow the steps. ओके। So navigate back to the users, all users blade। तो हम इधर जाएंगे, users, all users blade and then click on new user, create new user। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, create new user, so go to this create new user option। all right? यस सर, ये सब एंटर करना है Yes, मतलब। sir. हाँ, तो इसमें जाके देन यूजर नेम एंटर हम्म, करना है, यूसेज लोकेशन, डिपार्टमेंट। अभी यूजर का नाम डालेंगे, है ना? यूजर का नाम जो है, तो देखो ये अपने आप ये डोमेन बना रहा है, ये जो है ना, ये नो रूफी, नोरे रूफी gmail.on microsoft.com, एक अलग से उसने डोमेन क्रिएट कर दिया आपका, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया ना, तो इट हैज क्रिएटेड दैट। तो इसमें अभी हम यूजर्स क्रिएट करेंगे, तो दिस यूजर, so that domain name is like a family name। तो we create this user, तो I'll just copy paste the same, यही ले रहा हूँ बाय फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यूजर नेम लिया इसका, यहाँ पर डाल देता हूँ, चलो दिस इज द यूजर नेम, यस सर। राइट? एंड देन नेम,
डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम भी मैं इसको यही डिस्प्ले नेम डाल दिया, राइट। But sir, here the domain is not listed लिखा है, जैसे norerufi@gmail.on my, तो इसका यूजर आईडी कैसे क्रिएट होगा अगर ये कहाँ डोमेन लिखा लिस्टेड नहीं है तो? डोमेन नॉट लिस्टेड? हाँ। हाँ तो उसने डोमेन क्रिएट किया ना अपने लिए, इट हैज क्रिएटेड द डोमेन फॉर अस ना। ओके। ये जैसे अभी microsoft.com तो है, उसमें उसने एक, इफ यू अपना सी दिस, बनाया। हाँ अपना बनाया उसमें, हम्म। उसमें एक और एक सब डोमेन क्रिएट कर दिया, एक सब फैमिली क्रिएट कर दिया। ओके। You can create no as many families as you want. यस। So like that. Okay. यहाँ से now this password, वो भी कॉपी पेस्ट करना होगा सर? password we can give, चल password हम एक ही रखेंगे, SFT1234, इजी जाता है ना हमको, ऑटो जनरेट निकाल देते हैं, राइट। विल सेट आवर ओन पासवर्ड, सो SFT12345, 5 कैरेक्टर चाहिए, मस्ट नॉट वीक और कॉमनली यूज्ड। अच्छा ये वीक है बोलता है, राइट। तो पासवर्ड देंगे SFT@12345 7 और 8 भी डाल दूँ सर? 6 7 8 9। ओके, लिख के रखो एस एफ टी एट द ओके, रेट ठीक है एस कैपिटल, सर। एस कैपिटल एफ टी। देखो ऐसे, दिस इज द पासवर्ड, सी जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो डू दिस देन पासवर्ड एनेबल, इनिशियल पासवर्ड, यूसेज लोकेशन, ये सब डालना है हमको। तो विल जस्ट go to next, properties, first name last name. So first name, say test user, test user one, type member, okay, member या guest ये दिख रहा है ना। Job title, so this job title is important because based on that it will automatically get the membership of a group. When we create a dynamic group, automatically उसमें वो join हो जाएगा। हाँ। तो member का नाम जरा बराबर, मतलब job title cloud administrator, so I just copy paste this as it is. So here we put company name, say Softools, department IT department, okay. So like this we do, बाकी सब चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और कुछ है क्या, लोकेशन, यूसेज लोकेशन है ना, सो दिस विल पुट यूनाइटेड स्टेट्स बोला है इन्होंने, राइट। यूनाइटेड, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। देन वी से
डिपार्टमेंट आईटी बोला है राइट, तो डाल देते चलो भाई। डिपार्टमेंट किधर है, क्या ऊपर है ना डिपार्टमेंट था ना, दैट वी आर पुट राइट। But this job title is important for us, so ये cloud administrator डाला right. Then we go to next assignments, next step. If you want to assign to any groups or put any role, we can do that now, but no, we don't want to do anything right now. So next week it goes to review and create, so it shows what you have selected. So if you are happy with this, just hit on create, so it will create the user. Yes, sir. So it says user successfully created. Yes, sir. तो अभी तक दिखा नहीं, यहाँ पर दिखेगा अभी। Refresh कुछ होगा ऐसा? हाँ रिफ्रेश है ना, ये क्या रिफ्रेश है, हाँ, हो गया सर। क्लाउड को भी चाय पत्ती लगती है तो क्या करनी है। मीनल तो दिन भर चाय पीती रहती है। क्यों मीनल, यस सर। दिन भर चाय पीते रहते ना आप क्या? सर मैं चाय नहीं पीती। एक मिनट हाँ। Okay, done. जी सर। So it says note copy to clipboard the full user principal name. You will need it later in this task. ठीक है, so you know that if you go here, this is the user principal name. See, this is the user principal. This is how it is identified. It's uniquely identified in the whole world. See, this is the whole name. User at the rate no Noore Rufi gmail dot on microsoft.com. तो ये this is the unique ID throughout the world, you can say. Okay, Yes, sir. तो इसको हम कॉपी कर देंगे, तो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया ये राइट। So we will require for some exercises. So every step here is good because it teaches you something. Okay, so in the list of users, click the newly created user account to display its blade. Review the options available in manage section. Note that you can identify the Azure AD roles assigned to the users as well as the user accounts permissions to Azure resources. तो अभी हमने क्लिक किया इसको, इफ आई गो हियर मैनेज में जाएंगे तो यहाँ पर सब दिखता है कि what roles is assigned to this user. ठीक है ना, so currently no roles is assigned, and you remember that there are two types of roles, right? Can you tell me what are the two types of roles? Hello, do you remember? Built-in roles. अगेन वही सेम गाड़ी, वही वही बोलता है रे, उधर ही Type of तुम्हारे सुई roles. उधर ही घुसती रहती है, उधर ही घिस 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 Azure घिस AD, करते रहे। AD roles and ADD roles. नो, AD roles and सर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है तुम लोग सब है ना, नहीं AD तुम roles लोग को है ना बादाम खाना पड़ेगा रोज के, बादाम खाओ जरा। रूफी बोलो कौन से दो टाइप के रोल्स? रूफी तो खाता है ना बादाम रोज क्या?
For Azure AD roles, Hmm. Correct. And Azure roles. Only Azure roles is for resource handling. Azure AD roles is for AD related activities. RBAC सर वो वही आरबीएससी बताया क्या तुमको मैंने? वहां पर क्यों जा रहे हो? Azure AD roles and Azure roles. I told you na last हाँ time. बिल्कुल सर Azure roles are meant for handling resources. Azure AD roles are for users and groups. यस सर Getting? Yes, sir. Hmm. Just a second. Okay, so you remember Azure AD roles and Azure roles. So that's what they're asking to review कि वो user का देखो assignment manage में जाके you can see everything. वहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं, right? यस सर So in the list of users newly created, just a second. Click the newly created user account to display its bread. And then we manage may. So we have what? Assign roles, right? यस सर
यहाँ पर हमको दो चीज़ें दिख रहे हैं, असाइन रोल्स दिख रहा है और हमको एक एज्योर रोल्स असाइनमेंट भी दिख रहा है, राइट? अभी ऑल बोथ आर एम्प्टी एट द मोमेंट, सो नथिंग इज असाइंड. कैन यू ऑल हियर मी? हेलो? Yes, sir. हाँ. So now we will assign a role to this particular user. Okay, in manage section, click assign roles and then click plus add assignment button and assign user administrator role. So you know that assign roles मतलब AD roles हो गया, right? And Azure roles means ये resource के लिए हो गया, तो इसमें जाके you go and say add assignment. So when you click on this, so it will give you a list of roles. तो हमने कुछ दो चार रोल्स देखे ना एडी रोल्स में. एडी रोल्स में क्या क्या देखा था? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल, देन यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, देन और एक ग्लोबल बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर, यस राइट? सर, हाँ तीन ही देखे थे बिल्डिंग. बट मैंने आपको बोला था ना कि देर आर मेनी मेनी प्लेंटी रोल्स, राइट? तो हमको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल बनाना है. यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल मीन्स दैट पर्सन कैन क्रिएट यूजर्स, यू कैन मैनेज यूजर्स, राइट? तो यहाँ पर हम, इफ यू सी, इट्स अ वेरी बिग लिस्ट, इतने सारे रोल्स पहले से बने हुए हैं. ऑल दीज आर रेडीमेड रोल्स. तो यहाँ पर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स किया हमने. Can manage all aspects of users and groups including resetting password for limited admins. So I select this and then say add this role. So we are assigning this role to this particular user, right? तो अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे ओके. तो यहाँ पर रिफ्रेश करके भी नहीं आ रहा है ना, जस्ट हाँ, नाउ इट केम. सो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल आ गया, करेक्ट? क्लियर? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. तो ये चीज हो गया यहाँ पर, राइट? नाउ सी, अभी ये जो रोल हमने इसको दिया है, इससे हम टेस्ट करेंगे कि ये यूजर दूसरा यूजर को क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. So that's why they say that. So you also have option of assigning Azure AD roles when provisioning a new user. You know that जब हम नया यूजर क्रिएट कर रहे थे तभी भी हम रोल्स असाइन कर सकते थे. एक ऑप्शन था ना ऊपर कि do you want to means during provisioning the user, while creating the user also you can assign the roles. Hmm? But in this exercise we have not done that. Okay. तो इसमें ये सब नहीं किया हमने, हमने बाद में दिया इसको, राइट? So that is the thing. Now on the in private browser window, sign into Azure portal using the newly created user account. When prompted to update the password, change the password for the user. Rather than typing the username including domain name, you can paste the content.
तो इसीलिए उन्होंने कॉपी करने के लिए बोला था कि अभी हम वो यूजर से लॉग इन करेंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द इनकॉग्निटो विंडो, सो इट्स अ प्राइवेट ब्राउजर, Okay. so you go there, so it's as if you're logging in from another computer, is as good as you are logging from the other computer. इनफैक्ट आप आपके भी लैपटॉप से लॉग, इट्स अ क्लाउड नो, तो आपके भी लैपटॉप से लॉग इन करेंगे तो भी सेम ही इफेक्ट होगा, इट्स सेम लाइक दैट। सो न्यू कॉग्निटो विंडो का रीज़न ही ये है कि इट्स लाइक यू आर लॉगिंग टू अनदर थिंग, राइट। तो यहाँ पर एज्योर पोर्टल डालेंगे हम, लॉगिन। तो पोर्टल लॉगिन करते वक्त साइन इन बाय दिस पर्टिकुलर यूजर विच वी क्रिएटेड जस्ट नाउ, ओके। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में तो है, सो दिस द यूनिक आईडी ऑफ दैट पर्सन, सो उससे लॉग इन हो जाएगा वो, बट ही विल गेट द लिमिटेड एक्सेस। क्या हुआ, इट्स इज इनकरेक्ट, again I will put it one, next, there it is, right? So it's asking for passwords. What was the password? Capital S F T at the rate 1 2 One, two, three, 3 four, 4 5 6, right? 7, 8, 9. 6789. 7 8 9 तक गया, right? तो उससे साइन इन किया, तो इट्स लाइक अनदर यूजर, तो इट्स सेइंग व्हाट इज, इट्स Sir, आस्किंग we यू टू can't चेंज see your द, other screen. ओ नहीं If देख you पा are रहे। signing somewhere, we can't see it. एक मिनट एक मिनट, आई शेयर द एंटायर कंप्यूटर, जस्ट अ सेकेंड। दिखा क्या अभी आपको, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है No, sir. अभी आपका नाम और रूफी का नाम दिख रहा है। अभी? हाँ, अभी आया सर। हाँ तो इग्नोर, वो प्राइवेट ब्राउजर खोला था वो समझ में आया ना, Yes, ओपन दैट sir. प्राइवेट ब्राउजर। हाँ तो Incognito, उसमें मैंने फिर ये पेस्ट incognito. किया, ये यूजर ने पासवर्ड पेस्ट करने के बाद, अदरवाइज आई जस्ट डू वन थिंग, फिर से मैं लेता हूँ उसको। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वाले भी बहुत अजीब है एक्चुअली, क्या है, अभी माइक उसमें मैंने एजूर पोर्टल पे गया तो साइन इन के लिए बोल रहा, तो व्हाट आई एम पुटिंग इज द, जो मैंने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया था ना हमने, उसको पेस्ट किया, राइट, Yes, दिस इज द sir. यूजर, एंड देन सो आई जस्ट गो, शुरू से कर दो, एक मिनट, गूगल, एजूर portal login, so it's as good as you're going to another computer, right, another place,
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली अदर कंप्यूटर, कोई भी दुनिया में से दूसरा भी कोई भी कंप्यूटर लिया आपने, वहां से अपने लॉग इन किया, देन साइन इन। तो यहाँ पर जाके वी आई पेस्टेड इट लाइक दिस, नेक्स्ट, then I'll put the password which is SFT, capital SFT at the rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it is signing in, but it's asking you to change the password, right? So SFT at the rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I will put 10 भी डाल देता हूँ आगे, SFT at the rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0 I'm putting, right? SFT at the rate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0, like this. All right. Yes, sir. So it says the organization requires additional security information, follow the prompts to download and set up. ये सब वो security के लिए रहता है. You have 14 days until this is required. तो हमको ज़रूरत नहीं है अभी. वो it asks you to download authenticator app and it asks you to authenticate from that. So I say ask later. Hmm? You want to sign in? No. ये option आ रहा था ना, तो see this user can now log in. Hmm? So this user can do limited things. Okay. तो यहाँ पर हमने ये किया, गेट कैंसिल करेंगे इसको, गेट स्टार्ट, तो यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमको नहीं देगा करने के लिए. इफ आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक रिसोर्स ग्रुप या वर्चुअल मशीन, तो वहाँ जाके फेल होगा. देखो यहाँ पर दिखा नहीं रहा ऑप्शंस, राइट? ऑल यू कैन डू इज जस्ट क्रिएट अनदर यूजर्स, यूजर मैनेजमेंट कर सकता है. तो एक्टिव डायरेक्टरी, तो आई गो हियर, तो यहाँ जाके हम यूजर्स क्रिएट कर पाएंगे. एबल टू क्रिएट द यूजर्स. जस्ट अ सेकेंड. So here see it will give you option for that, only that add करने के लिए. बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे. देखो इफ यू सी उसमें जो जितने ऑप्शंस आ रहे थे यहाँ पर नहीं दिख रहे आपको. Yes, sir. राइट, इसमें कम है. कम है. तो जस्ट लिमिटेड एक्सेस, जस्ट दिस गाय कैन क्रिएट यूजर, तो क्रिएट यूजर कर सकता है. जो दूसरा यूजर बनाना है हम इसके जरिए बना सकते हैं. So that's what the exercise is about. So it tells you that you can create another user through this. So if you go here, I'll go to the screen. तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है. So you log in and in private. So while this account user can access Azure Active Directory tenant, it does not have any access to Azure resources. That's what you said. This is expected since such access would need to be granted explicitly by
using user role based access control, right? Yes, sir. So RBAC I have means a question. hmm, Why it asks us to open in private browser and why we cannot use a normal browser? You explained that it means that it's as good as logging from another system, but cannot two user log in from the same system? Is it there's a restriction? yeah, there is restriction now always in one system. एक browser में आप एक ही खोल सकते हो. In Okay. in private में कैसा है कि it doesn't keep any record. कभी कभी क्या होता है ब्राउजर में सेव भी होते हैं पासवर्ड. इफ यू ओपन अनदर ब्राउजर विंडो उससे करेंगे तो उसमें सेव्ड पासवर्ड भी रह सकता है, राइट? सो Right. दैट्स व्हाई इट इज आस्किंग यू टू क्रिएट गो टू, या तो फिर आप अलग सिस्टम से भी कर सकते हो. और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लाइक यू कैन ट्राई दैट, यू कैन ट्राई लॉगिंग इनटू अनदर फ्रॉम अदर सिस्टम. वेल क्लाउड बेस्ड है ना, तो एक बार यूजर क्रिएट हो गया तो इट कैन लॉग इन फ्रॉम एनी कंप्यूटर फ्रॉम द होल वर्ल्ड. Yes, sir. कहीं से भी लॉग इन हो सकता है. Yes, sir. Okay, sir. Getting? Yes, sir. Yes. Just from anywhere it can do the task. So that you have to understand, correct? Yes, sir. Okay, sir. Yes. Understood. तो यहाँ पर देखिए ऐसा आया है. So we go here and then in this in private scroll down manage section user settings. Note that you do not have permission to modify any options. तो वो हो रहा है यहाँ पर. If you go here manage, we go to settings, user settings. So you will be able to see the settings but you will not be able to Access. make changes. See, edit का option नहीं आ रहा है यहाँ पर, right? ये पेड नहीं है Yes. इसलिए. नॉट पेड की बात नहीं है, इसको लिमिटेड एक्सेस दिया ना. हाँ, इट्स ओनली वी हैव गिवन अ रोल टू दिस. हाँ. यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल दिया है, सो यू कैन जस्ट क्रिएट यूजर्स ग्रुप्स. ग्लोबल रहता तो सब. हाँ, सब कर सकता था. इट्स डिपेंड्स ऑन द रोल. गॉट इट? ग्लोबल वाला तो कर पा रहा है ना, दूसरे इसमें हाँ, तो बिल्कुल. ग्लोबल कर हो रहा है ना. जी सर. ओके, तो then you just create a new user. So this user has capacity to create a new user because he's a user administrator, right? So this delegation, you're delegating the work, right? तो ये user administrator हो गया. तो यहाँ पर गए हम लोग. So I'll go to another thing. Here we will do the this thing. Just a second. तो users में जाके we can create new user. So this user is able to create a new user, right? New user में गए create new user, उसके options दे रहा है इसको, right? Rufi, are you understanding? Yes, sir, because इसका job title भी तो user administrator ही था ना, तो this will be able to create new users. जॉब टाइटल नहीं मैडम, रोल हमने असाइन किया ना हाँ, उसको. रोल रोल, असाइन किया था इसको. इसको रोल असाइन किया हमने. जॉब Yes. टाइटल क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर था. जॉब टाइटल देने से कोई रोल असाइन नहीं होता है. नहीं नहीं. आप आपका रोल. टाइटल दे दोगे किंग ऑफ जर्मनी तो किंग नहीं बन जाओगे, राइट? ऐसा है. तो यहाँ पर अब जाएंगे तो यहाँ से यू विल, ठीक है, ये दूसरा यूजर लिया हमने. रोल के वजह से उसको मिल रहा है ऑप्शन. उसको हमने ये रोल असाइन किया है, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग दिस. सो यहाँ से हमने यूजर क्रिएट किया. डिस्प्ले नेम इज आल्सो सेम. पासवर्ड अगेन आई विल गिव सेम टाइप, लाइक वही दे रहा हूँ. एस कैपिटल एस एफ टी @1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, सेम ऑप्शन सारे सेम ही आएंगे. गो हियर, फर्स्ट नेम, यूजर. फर्स्ट नेम क्या देंगे? टेस्ट. लास्ट नेम यूजर 2. मेंबर
जॉब टाइटल, जॉब टाइटल क्या दिया वो देना पड़ेगा. What is the job title? System administrator. So I'll copy this. Job title is important for this particular exercise, because later on we are going to do the uh, dynamic members भी बनाएंगे ना, तो इसलिए company department is IT, right? हाँ, कंपनी से आईडी से मेरा So department is IT, आईटी right? So here usage location United States. यूनाइटेड स्टेट्स Location United States. United States, United States, United States. ये बोला है ना, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स. हाँ तो यहाँ से एंड देन वी साइन आउट फ्रॉम देयर. ये सेव करके रिव्यू एंड क्रिएट. ओके, क्रिएट. तो यूज़र क्रिएट हो गया. रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखेगा अपने को यूज़र. इधर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, आ गया है, यूज़र आ गया, राइट. यस So we have two users created now. यस सर So it says you sign out from here. यहाँ पर जाके you sign out. This user will sign out. Okay. So and I come back to this particular browser, and in this I will be able to see the users. Users में जाएंगे, all users देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे refresh करेंगे तो आ जाएगा. Got it? यस So like that Yes, we have sir. completed the task one. Clear now? यस Yes, sir. Okay, great. सर आप ये वीडियो आज डालने वाले हैं कल हाँ, डालता हूँ. क्योंकि वो थोड़ा देख के दो तीन करता बार हूँ. याद होगा ना फिर वो चले, करता हूँ ना मैं यहाँ से. ठीक है रूफी. रूफी फॉलो